Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we will discuss different aspects of mutual funds and do a complete review of what mutual fund investments are. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम श्रोताओं के प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ रंगा। The top stories. Foreign investors pull out more than 7,900 crore rupees from the domestic markets so far this month. And domestic stocks closed divergently amid high volatility in the week ended on Friday. Sensex ends near 60,700 points, while the Nifty remains almost flat to settle near 17,850. फरवरी में अब तक विदेशी निवेशकों ने देश के पूंजी बाजार से 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली और बीते सप्ताह में देश के शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स लगभग 60,700 पर बंद हुआ और निफ्टी लगभग 17,850 पर। And now for all the details. Foreign investors pulled out more than 7,900 crore rupees from the Indian capital markets so far this month. Foreign portfolio investors, or FPIs, withdrew 9,672 crore rupees from the equities market, 302 crore rupees from the voluntary retention route of the debt market, and 96 crore rupees from the hybrid market. On the other hand, FPIs also pumped in 2,154 crore rupees in the debt market, taking the total net outflow from the Indian capital markets to 7,916 crore rupees in February so far. Prior to this, FPIs had pulled out 26,544 crore rupees in January, while they pumped in 9,171 crore rupees in December and 33,847 crore rupees in November. Dhirendra, to talk about the foreign investors pulling out, close to 8,000 crore rupees, what is your sense? Why are they, continuously pulling out, and are the markets currently supported by retail investors and our domestic institutions? The market has been substantially supported by domestic investors. Have been a very consistent investor for last 1.5 to 2 years. And while foreign investors intermittently have been withdrawing more than they are investing, when FPIs are withdrawing, it is not that all of them are only withdrawing. A lot of them invest, a lot of them pull out, and then based on the aggregate, based on the gross investment, if they pulled out more than they invested, that is what we actually record as outflow. So in that sense, this is clearly, a very definite trend which might prevail till there is clarity in terms of, not clarity. I think this is a huge reversal. FIs have been permitted to invest in India. They started investing sometime in 92, 93, nearly 30 years. And during these 30 years, it was also a phase when the American market, the interest rate was zero or close to being zero. And for the first time, they are finding a reversal of it. So something which has changed after a full generation of investors not being used to it, this was bound to happen. Now, I don't know how severe it will be, because despite this, there are long-term, anyway, India was very lucky to actually have a policy whereby a substantial flow was, long-term investment into its equity market. There was a component of speculative investment, and there is always, long-term becomes short-term depending on the
state of the market. So it is quite understandable that in fact, India is very lucky to have a situation where this is the only market where there is still on a quarterly basis or fairly often we are finding inflows, and the only market which is still registering a positive economic growth compared to others. So in that sense, we are not finding that exodus of a uniform kind, but this might prevail. जी, धीरेन्द्र, जैसा अभी आप बता रहे थे कि भारत में अब भी दूसरे कई बाजारों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन बेहतर है, क्योंकि एफपीआईज दुनिया के कई बाजारों से अभी पैसे निकाल रहे हैं और हमारे बाजारों की स्थिति शायद दूसरे बाजारों से काफी बेहतर है अभी। जी हाँ, हमारे बाजार की स्थिति दूसरे बाजार से काफी बेहतर है। जी, चलिए आज हम म्यूचुअल फंड्स पर कुछ बुनियादी सवाल शुरू करते हैं। जैसे कई श्रोताओं के लिए नए निवेशक हैं जो अभी पहली बार अभी कमाई शुरू हो रही है जिनकी, और या बचत करना उन्होंने अभी भी शुरू किया है, उनके सामने निवेश के कई तरीके होते हैं जो बहुत पारंपरिक तरीके हैं जो एक जमाने से चले आ रहे हैं। इसके अलावा ये हम हमेशा रिकमेंड करते रहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में करें, तो कई बार ये सवाल पैदा होता है कि ये म्यूचुअल फंड्स है क्या चीज और ये निवेश के दूसरे तरीकों से कैसे अलग है। जी हाँ, लोगों के लिए सबसे पहला चैलेंज यही है कि किसी तरह से वो पैसा बचाए, और बचाने के बाद, और बचाना ही काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर बचाया हुआ पैसा आपके एक बैंक खाते में पड़ा रहे, सेविंग्स खाते में पड़ा रहे, आपके घर पे पड़ा रहे, तो पैसा पड़े पड़े कम हो जाएगा महंगाई की बोझ से। तो आज का 100 रुपया कल के 100 रुपए के, भविष्य वाले 100 के बराबर नहीं होगा अगर वो कुछ बढ़ता नहीं है, और महंगाई जितना नहीं बढ़ता है तो आपका पैसा कम हो रहा है। इसके लिए अक्सर लोग कहते हैं कि आपको अपना पैसा लगाना चाहिए और ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां पे वो महंगाई से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए, और उसके लिए इक्विटी कहा जाता है। और इक्विटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इक्विटी जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी सामान बनाती हैं, वो इकोनॉमी का भाग होने की वजह से समय के साथ, महंगाई के साथ अपने मुनाफे को बढ़ा पाती हैं, और अपने मुनाफे को अगर वो बढ़ा पाती हैं तो वो महंगाई और जो स्टॉक मार्केट का भले ही रोज बाजार खुलता है, रोज बंद होता है और रोज दाम में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट को ये कहा जाता है कि लंबे समय में ये कंपनियों की आमदनी का पीछा करता है। अगर कंपनी की आमदनी बढ़ती है, दाम बढ़ता है। लंबे समय में अगर दाम कम होता है या मुनाफा नहीं होता है या कंपनी पैसा बनाने में सक्षम नहीं होती है तो कंपनी डूब जाती है। तो अर्निंग्स को राइड कर पाना स्टॉक मार्केट का अल्टीमेट गोल है, और कंपनी का वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में या लंबे समय में, ये भले ही कम समय में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता रहे, भविष्य मतलब कुछ अरसे में यही देखा जाता है कि ऐसा हुआ। लेकिन स्टॉक में पैसा लगाना बड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां किसी प्रोमोटर की वजह से बंद हो जाती है, बहुत सारी कंपनियां किसी खास इंडस्ट्री जो कि समय के साथ नहीं बदल पाती है या रेलेवेंट रह पाती है, तो इसलिए बंद हो जाती है। इसलिए आपके लिए दो तीन चैलेंज खड़ा होता है इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए। उचित कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कंपनी अच्छी ढूंढी और एक ऐसे दाम पे आपने खरीद लिया जहां पे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। बहुत कमाल की कंपनी बहुत कमाल के दाम पे खरीदने पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि भारी नुकसान होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कोई लगाने वाला व्यक्ति है तो वो आप इसलिए एक व्यक्ति को आप अपना पैसा देते हैं, फंड मैनेजर को पैसा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं, आप किसी इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाते हैं, तो सोच ये है कि आप हमेशा सही नहीं होंगे और कुछ गलतियों का मार्जिन रखते हुए इस वजह से आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने का तरीका यही है कि आप किसी इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं या किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा इंटरेस्ट करें जो आपके लिए वो पैसा लगाएगा। और ये सुविधा धीरे धीरे पैसा लगाने की, डाइवर्सिफाई करने की, इक्विटी में लंबे समय का पैसा लगाने की, ये सुविधा आपको म्यूचुअल फंड प्रदान करती है। दूसरी तरफ डेट फंड है। डेट फंड ऐसे हैं जहां पर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं
बहुत आपका कोई भी पैसा जो कि कुछ समय के लिए लगा हुआ हो, या एक ऐसा पैसा जिसको कि आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको आप डेट में लगाते हैं। डेट फंड का फायदा यह है कि एक बॉन्ड में लगाना आम निवेशक के लिए उतना आसान नहीं है, और बहुत सारे बॉन्ड में पैसा लगाना उनके लिए संभव भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड को आजादी से लगाने का जरिया है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस का MIP भी में लगा रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदते हैं तो एक मिनिमम होगा उसके मैच्योरिटी तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप एक बॉन्ड फंड खरीदते हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है, किसी एक कंपनी के डूबने से आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपको बॉन्ड में भी मिलता है, समय के साथ आप और समय के अनुसार, कितने समय के अनुसार आप उस तरह का बॉन्ड फंड चुन पाते हैं जो अदरवाइज आपको उपलब्ध नहीं है। Dhirendra, you're talking about diversifications, and in today's program we are basically focusing on the young investors, say 25-30 years of age, who has just started working and is able to save. Say for example, if a person is able to save 10,000 rupees, obviously I'm sure you're not recommending that person to invest the entire sum of 10,000 in mutual fund itself. Even that should be bifurcated, and the entire basket should have other investment assets as well, isn't it? No, it entirely depends. I would rather, for any young person, I would suggest him a hierarchy, assuming you are working and you are able to save 10,000 rupees a month. And so first and foremost, you should have, some money in fixed income fund or bank deposit, or lying in your bank, say 3 months income, or 3 month expense thing, so that you have your emergency funds ready. Okay. Buy a health insurance. Then the money which you are unlikely to need for a couple of years should be invested in equity. When investing in equity, it will automatically get diversified when you are investing in an equity fund. Yeah. Would you also recommend a fresher to, go in for a term life insurance before he or she starts investing? Yes, absolutely. These are the absolute basics. The background, the foundation has to be the emergency fund, the health insurance. Because if you don't have a health insurance, all your savings and investment plan will get derailed. Likewise, if you don't have a term insurance, but buy a term insurance only when you have dependents. If you don't have dependents, don't buy term insurance. The moment you have dependents, buy a term insurance. The moment you are an initial phase of anybody's life, we are adding huge dependents, whether it be by buying house, when we have children, when we get married. So these are 3 milestones particularly. When you add children, when you have children, or when you add a home, or when you get married, and that causes a financial dependence of your spouse, then you need to really cover for that. And early stage of the career is the phase when you badly need it, because that is the time when your net worth is zero, and you have started building it. So, and that way, getting a term insurance is the only option, because no other option. And it's also a cautionary note for most investors that many people think that buying a term insurance is a wasteful exercise because you don't get anything later. That's the idea. It's buying protection for your family. Look at it as an expense. And don't mix insurance and investment, because you don't get the best of both, best of either. जी, तो धीरेन्द्र जी ने अभी बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 3 महीने के खर्च का पैसा अपने अकाउंट में रखना चाहिए। आपको, अगर आप पर कुछ आश्रित लोग हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बड़े खर्चे हैं। और इसके अलावा जो हम हमेशा दोहराते रहते हैं कि आप बीमा और निवेश को आपस में घाल-मेल ना करें, दोनों को अलग अलग रखें। बीमा लेना है तो बीमा लें, और निवेश करना है तो निवेश करें, दोनों को मिलाएं कभी ना। चलिए अगली खबर पे नजर डालते हैं। साप्ताहिक बाजार कैसा रहा इस सप्ताह? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जहां गिरावट देखी गई, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स में 159 अंकों की गिरावट रही और ये 60,683 पर बंद हुआ। निफ्टी 2 अंक की मामूली बढ़त के साथ 17,857 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में बढ़ोतरी हुई। मिड कैप जहां 1.78% बढ़ा, वहीं स्मॉल कैप में 1.42% की तेजी रही।
इस सप्ताह रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी की है और ये 6.5% हो गया है। पिछले कुछ महीनों में रिजर्व बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। धीरेन्द्र, रेपो रेट के मद्देनजर बाजार पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि शायद हमारे यहाँ जो ब्याज दरों के बढ़ने का जो दौर है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी रिजर्व बैंक का ऐसा सोचना है कि जो महंगाई का जो दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ब्याज दरें बढ़ी हैं और पता नहीं, इसके बारे में मैं अटकलबाजी नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मामूली सा बढ़त है एक क्रम में जिसमें काफी समय से ये बढ़ता चला रहा है, धीरे धीरे बढ़ता रहा है लेकिन अब इसका पेस कम हो गया है और इससे मोटे तौर पे यही समझना चाहिए कि आपका होम लोन थोड़ा सा महंगा होगा या उसके ब्याज दरों के या उसमें ब्याज दरों में कमी होने की संभावना कम हो गई है। इसके वजह से बॉन्ड के प्राइसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, जिस वजह से लंबे मैच्योरिटी वाले बॉन्ड फंड वहां पे थोड़ी गिरावट देखी जाती है और इसका केवल आपको यही लगता है, पता चलता है कि ये एक एडवांस सिग्नल है कि आपके भविष्य में ब्याज दरों को इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जी, अभी कार्यक्रम से पहले मैं और रंगाभाषम चर्चा कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स नए निवेशकों के लिए कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। जैसे अब सेबी ने इसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, इक्विटी स्कीम्स है, डेट है, हाइब्रिड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, अदर स्कीम्स जो भी है। इनके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दे पाएंगे कि इक्विटी स्कीम जैसे आपने पहले चर्चा की और डेट की, ये हाइब्रिड क्या चीज है? जी, जैसा मैंने कहा कि इक्विटी स्कीम में आपको अपने लंबे समय का पैसा लगाना चाहिए और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और बल्कि मैं भी थोड़ा उसमें भागीदार हूँ। मेरा भी योगदान रहा है इस कंफ्यूजन को बढ़ाने में कि लोगों की जरूरत 3-4 फंड से पूरी हो जाती है। एक लार्ज कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड जो हर जगह लगाता हो, छोटी कंपनियों में लगाने वाले फंड जो कि उतार चढ़ाव ज्यादा दिखाएंगे लेकिन लोग उम्मीद करते हैं, या मिड कैप फंड, इससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन इक्विटी फंड करीब 17-18 तरीके के हैं। इसके अलावा अगर हम सारे इंडेक्स फंड के और वेरिएंट्स को माने तो इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है। अक्सर आप सुनते हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अंतर क्या है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड, बैंकिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत सारे थीमेटिक फंड उपलब्ध हैं, बहुत सारे सेक्टोरल फंड उपलब्ध हैं, फार्मा, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन, डिविडेंड यील्ड, एनर्जी, ईएसजी, मल्टीनेशनल का एमएनसी फंड, पीएसयू फंड, इंटरनेशनल फंड। तो ये ढेर सारे तरीके के फंड उपलब्ध हैं जो कि निवेशकों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन निवेशक इस कंफ्यूजन से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। अधिकतर फंड को आप इग्नोर कर दें। अगर आप किसी मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाते हैं, अधिकतर जरूरत आपकी पूरी हो जाती है। यहाँ आप फंड मैनेजर को पूरी आजादी दे रहे हैं कि जहां मन करे आप लगाइए, जहां आपको अपॉर्चुनिटी लगे। और किसी फंड मैनेजर को यह राइट हमें देना चाहिए। अगर आप एक्टिव फंड में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप ये नहीं देना चाहते तो किसी इंडेक्स फंड का चुनाव कीजिए। आप बिल्कुल इंडेक्स जितना रिटर्न मिलेगा, न कम न ज्यादा, बल्कि आप भरोसे से कह सकते हैं कि उसका खर्चा जरूर हमेशा हर वक्त कम रहेगा। तो एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए या एक अच्छा मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कीजिए। जब आपको उतार चढ़ाव की आदत हो जाए तब किसी स्मॉल कैप फंड का में निवेश कीजिए ताकि वो आपके रिटर्न को बढ़ा पाने में सक्षम हो। दूसरा, ये जो हाइब्रिड फंड है जो आप पूछ रहे थे, ये एक ऐसा फंड, एक ऐसे तरीके का फंड है जो इक्विटी में भी पैसा लगाता है, डेट में भी पैसा लगाता है, एक खास अनुपात में। और खास अनुपात में पैसा इक्विटी में लगाने से उसका उतार चढ़ाव का या जो रिस्क का जो एक्सपीरियंस है निवेशकों का, वो पूरी तरह बदल जाता है। ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो कि 75% अपना पैसा इक्विटी में लगाते हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड, आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा डेट। तो ये जो अग्रेसिव हाइब्रिड है, इनमें कभी पैसा अगर बाजार गिरे तो यहाँ इतनी गिरावट नहीं होती। लंबे समय के निवेशक के लिए, पहली बार के निवेशक को अक्सर मैं कहता हूँ कि इन्हीं फंड में आप पैसा लगाइए। Yeah, right. And Dhirendra, often, we get to know that, the freshers, youngsters, when they join a company, an organization, they are offered NPS, as a social security.
And since NPS also invests into equities, debt, and government securities, would you say that they can probably give a go by to mutual fund investment and rely more on NPS, or do they still need to invest in mutual funds separately? No. First and foremost, NPS is designed like a mutual fund, but nearly like a mutual fund, not exactly like a mutual fund, because the money that normally the NPS offered to private sector employees is very different as compared to the government, the state government and the central government employees, or the autonomous bodies, the kind of NPS that they get. Particularly the central government and state government employees, they don't have a choice of choosing a plan. They invest in a plan where they are almost like a hybrid fund. They are a hybrid fund with substantial allocation to fixed income, and they have been able to return little better than fixed income because of a small equity allocation ranging between 10 to 15%. But when a private sector employee invests, he has the choice of investing his asset allocation. Today it is possible to have 75% allocation in equity. Your money will be deducted, and sometime it will be matched by your employer, sometime not. In case of government employees, it is matched and sometime more, because in case of central government employees, central government puts 14% and 10% is deducted from their salary. So in all, as effectively it is more than, it's 1.4 times money the moment you invest. But private sector employees, this is a contribution going from, it's a deduction which goes towards your retirement fund. Yeah. This other difference from a mutual fund is that you can't withdraw it till you attain, till you retire, till you're 58 or 60. So, in that sense, it actually enforces discipline. There are 2-3 occasions, where NPS permits withdrawal, which is critical illness, I think children's education, and constructing a house. Yeah, that's right. Well, we'll continue our discussion on mutual funds, but before that, let's take a look at some of the other news stories as well. Prime Minister Narendra Modi has congratulated India Post for opening more than 10 lakh Sukanya Samriddhi accounts in just 2 days. In a tweet, he said this will help in securing the future of the girls and empower them. The Prime Minister said this in a reply to a tweet by the Union Minister Ashwini Vaishnav. And to talk about the Sukanya Samriddhi Yojana, probably this is one of the schemes where highest interest rate is being paid, isn't it? I think 7.6%. Yes, it is among the highest yielding fixed income avenue, but this is not among the newest schemes. This was launched a couple of years back as a special investment vehicle for the girl child. But today it is not the highest. Today the highest is Senior Citizen Savings Scheme, which is yielding 8%. Yeah. Right. Yeah. And coming back to our mutual funds, for the benefit of our listeners, although we have, in Market Mantra discussed many times, but, for the sake of, clarity, let's talk about the tax treatment of mutual funds. How exactly mutual fund investments are treated and taxed? There are, mutual funds from taxation point of view, are treated differently depending on the character of it and depending on the period of holding. And for equity and debt, it is completely different. If you invest in an equity fund and sell it before 1 year, all your gains will be taxed at, you have generated short-term capital gains tax, and there is a special 15% short-term capital gains tax applicable on the gains. So whatever be the gain, 15% of that you pay, and that is it. If you hold it for 1 year and more, then it is long-term capital gains tax. You are liable to pay 10% of the gains as long-term capital gains, but your first 1 lakh rupee gain is tax exempt on an annual basis. That is an exemption which is available on an annual basis. In case of debt, it's very different. And for defining debt or equity, it is dependent on the average asset allocation of the underlying money. So a
aggressive equity, a hybrid fund will be treated as equity, whereas a conservative equity fund, which has less than a third of money in fixed income, in equity and remaining in fixed income, it will be treated as debt. And 100% debt obviously will be treated as debt. Here the rules are different. For all holdings or for any gain which is realized within 3 years, it is added to your income and taxed accordingly, as per your slab rate, whatever tax slab you fall into. If you hold it for 3 years and more, it is treated as long-term capital gains, whereby the gains are indexed, and post-indexation, you are liable for 20% capital gains tax. So that actually reduces, because indexation is one thing which reduces your tax liability on the gains from fixed income very substantially, and that is how it actually becomes that's one of the key charm, because in any kind of in any kind of bond or deposit that you make, all your income is taxed in that, because it's an interest income, and it is taxed depending on which financial year it falls into, and you are liable to pay those taxes then in that financial year itself. In case of that's another advantage. In case of mutual fund, you are not liable to pay any tax till you realize it. जी, अगली खबर पे नजर डालते हैं रंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की प्रगति का इंजन बनने की क्षमताएं और संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके पास 95 लाख इकाइयों के साथ देश का सबसे बड़ा एमएसएमई क्षेत्र है। इनसे रोजगार के लाखों अवसर सृजित हो सकते हैं। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन जैसे आयोजन उत्तर प्रदेश को देश में उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, और जहां महिलाओं का ऐसा सम्मान और अवसर उपलब्ध होते हैं, वहां विकास अवश्य होता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तक राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। Ranga, आपके पास जी। And continuing with our focus on mutual funds, Dhirendra, although you always been saying that sectoral funds should be avoided, but can't one have a strategy like sitting patiently by the side of the lake while fishing, and maybe 3 years, 5 years, 7 years, wait patiently for that particular sector for an uptrend, and encash it and move out? If you are able to do it, by all means, then why only sector? If you can be in and out of the market in a very opportunistic way and be right, then you can be very wealthy. Why only dabble in a sector or a theme? Why not the entire market? Be fully invested in market and be completely out of market depending on the circumstances, depending on your reading of the outlook. But mutual funds were supposed to simplify our life, and they provide these 2-3 things: diversification, convenience to invest, and now this convenience has been multiplied many times because you're right. So keep it simple. Yeah. And if at all, if you are in one case, people should invest in a sector fund. Right. Think about a sector. Yeah. Dhirendra, we are running out of time. वक्त इतना ही है। कार्यक्रम में आने और बहुमूल्य जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pull out more than 7,900 crore rupees from the domestic market so far this month, and domestic stocks closed divergently amid high volatility in the week ended on Friday. Sensex ends near 60,700 points, while Nifty remains almost flat to settle at 17,850. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.